ऑलराइट शिप्स, एलियंस को लेकर गवर्नमेंट अब चीज़ें थोड़ी इंटरेस्टिंग कर रही है। हाल ही में यूएस कांग्रेसमैन एरिक बर्लिसन 28 जून 2025 में ट्विटर पर एक ऑडियो चैटरूम पर आकर बताते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एलियंस को लेकर इन्फॉर्म किए जा रहे हैं। वो एलियंस जो यूएस गवर्नमेंट के साथ काम कर चुके हैं और पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर के टाइम से एक्टिव है। एरिक बर्लिसन ने बताया कि उन्हें सीआईए के एक टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर एरिक डेविस ने ओपन मीटिंग में बताया था कि वो लोग अब तक 4 एलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर चुके हैं जो पृथ्वी पर एक्टिव है, जिसमें ग्रे एलियंस है, मैंटिस रेस है, रेप्टिलियंस है और नॉर्डिक एलियंस है। इसके साथ ही वो बताया कि इन ब्रीफिंग में मौजूद डेविड ग्रश ने उन्हें बताया था कि इन एलियन में जो ग्रे एलियंस है वो एक बायोलॉजिकल रोबोट है जो इनमें सबसे ज़्यादा एडवांस है और हमसे कई हजार साल आगे है, जो अपने पास साइनिक पावर्स रखते हैं, दिमाग से थॉट पढ़ने और कम्युनिकेट करने की, जिससे वो अपने यूएफओज और अपनी टेक्नोलॉजीज़ को भी ऑपरेट करते हैं। वहीं नॉर्डिक एलियन जो इंसानों जैसे दिखने वाले हैं वो हमसे शायद कुछ सैकड़ों साल ही आगे है, लेकिन वो पृथ्वी पर इंसानों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी अपनी रेस को इंसानों के साथ मिलाकर हाइब्रिड इंसान बना रहे हैं, जिसमें कुछ क्रॉस ब्रीडिंग हाइब्रिड पृथ्वी पर लोगों के साथ मिक्स होकर रह भी रहे हैं। और वो इसकी जानकारी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी इंफॉर्मेशन ब्रीफिंग में भी दे चुके हैं। अब एक बार ये ऑडियो आप खुद सुन लीजिए। And he's very careful. He doesn't tell me things that I'm not allowed to hear, like in a public setting. So I guess what I can share with you. What he says that there are classifications. There's of different species. So I was in a briefing where Eric Davis, who is like the top scientist for the CIA, he gave in an open hearing. He told me in front of the world on YouTube that they have identified 4 species of aliens. That one that's called the gray, which is the grays are like a robotic, a flesh-like, automaton kind of creature that's really doesn't really have it's acting under the direction of another species. Like an avatar almost. Probably like another, I don't know which species it is being controlled by. And then you've got this creature that resembles like a mantis, or like a, what do you call it, praying mantis. And so a lot of people call it an insectoid. And so you've got that creature, and then there's a reptilian, and then there's one that they call the Nordic one. Yeah, the tall whites or the Pleiadians. Yeah, and so what they claim is that they look somewhat human, and so what Grush has told me, this is what blew my mind, and what he said that happened with Trump, and I'll just tell you this, and just again, I don't know that. I want to preface this by saying, this is not what I believe. This is what I've been told. Okay, he said that the Nordic people or the Nordic aliens are like a few hundred years more advanced than we are, but they're not super advanced. They're not like, he said the Greys, whatever is sending the Greys is extremely advanced, like thousands and thousands of years more advanced than us, because it's doing all the anti-gravity stuff, all this crazy stuff that's very highly advanced. And a lot of it is what he says with the Greys is psionic. So they basically don't have physical interfaces. They're using their mind, and that there's an interface that picks up thought, and then that and that's how they operate these vehicles, is out of psionic. But the Nordic people somewhat resemble humans, and they have been experimenting with crossbreeding with humans. And he says some of them, that there are aliens that are crossbreeds living in the world. And I asked him, I go, okay, do they know that they're a crossbreed, or do they, like, how would you know that they are a crossbreed? And he didn't have an answer for that. Like he didn't know if they knew what, but he said that the briefings he's had describe,
talked about them, and he said when Trump was briefed on this topic, because Trump finally had a briefing, and he was in the middle of impeachment, like he was in the middle of being impeached, so he's going through that, and then he had like this existential briefing that just kind of rocked his worldview. He joked in the briefing whenever they said that there are these half breeds. He joked that Adam Schiff must be one of them. And so, yeah, Nifty Schiff is an alien, half breed. I could see him being a reptile hybrid if that means being a snake, Yeah. So I'm just telling you exactly what was said to me. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुंह से ये सब बातें सुनकर अब आपको इतना अंदाजा तो लग ही जाना चाहिए कि चीज़ें कितनी तेज़ी से एलियन कॉन्टैक्ट और प्रोजेक्ट ब्लू बीम की तरफ ले जाई जाने वाली है, क्योंकि ये लोग इन एलियंस की मौजूदगी को ना केवल अब मान चुके हैं, बल्कि वो इनके द्वारा इंसानों पर किए जा रहे एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि लोगों को आगे इसके लिए तैयार किया जा सके। पर मेरी नज़र में ये जिन एलियंस की बातें कर रहे हैं वो कोई अच्छे और पॉजिटिव एलियंस नहीं है, बल्कि ये एक नेगेटिव एलियन का ग्रुप है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर गैंग का हिस्सा है, जो पृथ्वी पर डीप स्टेट के साथ सालों से इन्वॉल्व रहा है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब इन नेगेटिव एलियंस के ग्रुप के साथ इनकी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट को और उनके पृथ्वी पर बने अंडरग्राउंड बेसेस को ये लोग आने वाले टाइम में कितनी सफाई से पेश करते हैं, ये सब देखने वाला होगा। वैसे ट्रंप और एलियन को लेकर ऐसी जानकारी पहली बार नहीं आई है। इससे पहले भी 2020 में फॉर्मल इजराइल स्पेस सिक्योरिटी के चीफ हाइम एशेद ने बताया था कि पृथ्वी बहुत पहले से ही गैलेक्टिक फेडरेशन के एलियंस के साथ संपर्क में है, पर इसकी जानकारी को अब तक इसलिए छुपाया जाता है क्योंकि लोग इसके अस्तित्व को जानने के लिए अभी तक तैयार नहीं है। जिसके आगे एशेद बताए थे कि एलियंस यूएस गवर्नमेंट के साथ बहुत पहले ही डील कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है यहाँ पृथ्वी पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसके साथ ही यूएस के पृथ्वी के आसपास दूसरे ग्रहों पर भी ऑफ प्लैनेट बेसेस मौजूद है, जिनमें से एक बेस मार्स पर है जो ज़मीन के नीचे अंडरग्राउंड में मौजूद है, जहां एलियंस और अमेरिकन एस्ट्रोनॉट साथ में काम कर रहे हैं, पर वो इसकी जानकारी को छुपाए हुए है। तो आप समझ सकते हैं चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रही है। बाकी मैं ओवरऑल कहूँ तो अगर ये आने वाले टाइम में इन नेगेटिव एलियंस के ग्रुप को अच्छा बताकर पृथ्वी के लोगों को इन एलियंस के साथ कॉन्टेक्ट करवाने की तरफ ले जाते हैं तो मैं बस यही कहूँगा, बेवकूफ़ ना बने। ये कोई पॉजिटिव एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस नहीं है, ना ही इनके एजेंडा इंसानों की भलाई वाले हैं। ये एक स्वार्थी मटेरियलिस्टिक एआई नैनोबॉट से इन्फेक्टेड एलियन प्रजातियां हैं जो इंसानों को कंज्यूम करती है और उन्हें भी उनके जैसा बनाना चाहती है।